Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all. Today it is class 12, subject economics, and we are going to discuss today about the fiscal policy and its role. What is fiscal policy? Fiscal policy, in other words, it is also called budgetary policy of the government. Fiscal policy is the revenue and expenditure policy of the government, focusing on growth and stability of the economy. It also called budgetary policy of the government. Revenue and expenditure being the two core components of the budget. The government tries to achieve its set of objectives by varying the size and composition of revenue as well as of expenditure. अब जहां तक फिस्कल पॉलिसी का ताल्लुक है, इसको दूसरे लफ्जों में बजटरी पॉलिसी भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट की जो वसूल ब्याबी, जो टैक्स के ज़रिए जो पैसे वसूल किए जाते हैं या जो कि गवर्नमेंट की जानिब से जो खर्चा किया जाता है, ये इस फिस्कल पॉलिसी में ये इंदराज होता है। अब जहां तक सवाल है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक मनी है इन शेप ऑफ टैक्सेस वो ज़्यादा से ज़्यादा वसूल हो और उनका अच्छे से इस्तेमाल हो इंफ्रास्ट्रक्चर पर और बाकी चीज़ों पर। तो इसलिए ये जो गवर्नमेंट की हमेशा ये कोशिश होती है कि दे कैन अचीव द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बाय वेरिंग द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एज वेल एज द एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये जो अकॉर्डिंग टू DC Ravan, an economist, according to DC Ravan, fiscal policy is defined as the discretionary action by the government to change, number one, the level of government expenditure on goods and services and transfer payments and the yield of taxation at any given level of output. यानी ये जो गवर्नमेंट है, ये जो फिस्कल पॉलिसी है, इसको ऐसे डिफाइन किया है कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और जो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स है उसकी लेवल को रेज करना और जो यील्ड ऑफ टैक्सेशन है और जो टैक्स की वसूलियाबी है एट एनी गिवन लेवल ऑफ आउटपुट उसको वसूल करना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अब रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी का। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस रोल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। Role of fiscal policy. Following observations highlight the role of fiscal policy in a welfare state like India. Number one is accelerating the pace of growth. Accelerating the pace of growth. In a welfare state like India, there is a direct intervention by the government in the production process. The government spearheads the process of growth through investment expenditure and strategic sectors of the economy. Defense sector income in particular, autonomous investment by the government is a key instrument of fiscal policy in India. It seeks to trigger the pace of growth. Number two is regional balanced growth.
regional balanced growth. By offering tax holiday and subsidies, the government prompts private investors to focus on backward areas. It facilitates balanced regional growth. While balanced regional growth is a virtue in itself, it also helps to stop disparate migration of labor from one state to the other in search of jobs. रीजनल बैलेंस्ड ग्रोथ का गवर्नमेंट की एक कोशिश है कि रीजनल बैलेंस्ड ग्रोथ को बढ़ाया जाए, ताकि ये जो मजदूर लोग एक जगह से एक स्टेट से लेकर दूसरी स्टेट को जाते हैं वो ना जाएं, और उनका जो है उनको प्राइवेट इन्वेस्टर्स को प्राइवेट ये जो रीजनल ग्रोथ को बढ़ाया जाए, ताकि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो नंबर 3 है इनक्लूसिव ग्रोथ। Inclusive growth fiscal policy focuses on inclusive growth of the economy. It is a growth process in which rate of participation of the people is accorded high priority. Accordingly, gains of growth are evenly distributed across all sections of the society. In India, high expenditure by the government on rural development may be cited as an example in this context. Number 4 है social equality. Social equality. अब ये जो social equality है is yet another goal of fiscal policy. The government wishes to achieve it by offering transfer payments to weaker sections while levying taxation on richer sections of the society. Progressive taxation and expenditure on subsidies or important fiscal instruments being used in India to foster social equality. And number 5 is stability. Stability. Importing stability to the process of growth and development is perhaps the central role of fiscal policy in any economy. In the wake of globalization, there is a high degree of mutual interdependence among economies of the world. While this has enhanced the pace of growth, this has also generated a high degree of economic uncertainty, marked by bubbles and busts. Accordingly, stability has emerged as the principal issue in the context of fiscal policy in an economy. The government tries to maintain fiscal discipline in the economy so that inflationary and deflationary gaps are restricted both in their intensity as well as frequency. The government tries to correct inflationary gap by reducing its expenditure and raising the revenue. A reduction in expenditure and a rise in revenue during inflation so a liquidity from the system. A reduction in liquidity causes a reduction in aggregate demand. According inflationary pressure tends to cool off otherwise. Likewise, deflationary gap is corrected by increasing government expenditure and reducing the revenue. A rise in government expenditure and a cut in the revenue cause a multiple rise in the level of income and employment through a rise in aggregate demand. गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यूज हैं उनमें इजाफा किया जाए और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कमी हो, और तभी जब गवर्नमेंट रिसेप्ट्स ज़्यादा होंगे तो तभी तो एक्सपेंडिचर जो होगा, तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बाकी चीज़ों पे गवर्नमेंट की ये जो एक्सपेंडिचर होगा तो तभी तो ये चीज़ें बन सकती हैं। तो इंशाल्लाह अब हम
नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। तो टिल देन थैंक यू।